Hello, hi, good evening. Thank you so much for joining today's session. This session is going to be super amazing and special because I have a special guest for you. Somebody who's with us for the longest time, somebody who is going to help, coach, motivate not just me, my team, but all of you in today's health journey. Before that, a very warm welcome and good evening to our entire AccuCheck Wealthy family. Hello, Sanjeev ji. Hello, Mr. Vinod. Hi, Suchitra. Hello, Nayan. Hi, Prakash ji. Hello, Tarkhedkar ji. Hello, Mr. Chakravarti. Hello, Mr. Amol. Hi, Harshal. अजय कुमार जी कैसे हैं आप हेलो मिस्टर अविनाश हेलो मिस्टर मेती आई होप all of you are doing well. Thank you so much for spending your weekend with us. This is something which not just motivates me but my entire team, and thank you so much for getting connected with us today. Today's session is going to be a very special session, something which will help each one of us to understand a lot more specific to season. I think many of you have requested this topic for today, and we are going to discuss exactly the same thing in today's session. Yes, and I think all of you must have seen this face before, who's a special guest speaker for us today. Um, Without any more delay, let me introduce our host for today, our speaker, our guest, one of my team members, um, my supreme premium health coach, somebody who's very adaptive in her clinical skills, who has 100% outcome based ratio with all of the patients she handles, a patient database of more than 2000 patients is currently handled by her. My special coach, somebody who's a trained diabetes educator, a CBT specialist, and a lifestyle intervention coach. We all welcome you on behalf of the AccuCheck Wealthy family, Miss Madhumanti Guha, our in-house diabetes educator and a clinical expert who is going to share her insights and her experiences for today's topic, diabetes management in summer season, and some tips to combat, ensuring that your blood sugars, your weight, your cholesterol, your heart problems, your hypertension, all of these things are maintained. So, without any more delay, over to you, Madhumanti. Thank you so much for your association with AccuCheck Wealthy program. A patient database of more than 2000 successful patients is a complete win-win. Thank you so much for your contribution. And all our speakers would love to hear your insights, tips to combat summer, and how to take care of your health in this season. Over to you. Hi, good evening, everyone. Welcome to AccuCheck Wealthy. Uh, good evening, everyone who joined today in this session. I am Madhubanti Guha, diabetes expert, and today I will be discussing with you all how to combat diabetes in this summer season. Like, it will not be something like only I will be speaking and you will just listen. This is going to be a very much interactive session. Whatever I will share with you all, please, if you have any question, if you have any query, please drop that in the chat section. After the session will get over, I will try to answer your queries from my side as much as it will be possible for you. So let's start today's session, and just if you have any queries in between, also just drop it in the chat section. Okay. Okay. All right. So our today's topic is tips to combat diabetes in these summers. As we all know, temperature is rising like anything outside. It's very hot. Maybe some of you are facing issues like
heavy sweating. Some of you are facing issues like discomfort throughout the day. Whatever you are eating, maybe it is not getting digested easily. So how to fight back all these things? How to take care of all these things? We will just try to understand one by one in today's session. So okay, now the first and foremost point is whatever problem we face in summers, the major point is dehydration. अभी ये डिहाइड्रेशन क्या है, कैसे होता है? सबको तो सुनने में आता है बहुत कॉमनली, इसको डिहाइड्रेशन हो गया है, इनको डिहाइड्रेशन हो गया है, पर ये होता क्या है एक्चुअली? डिहाइड्रेशन मीन्स जब हम लोगों के बॉडी के अंदर वाटर लेवल नॉर्मल से बहुत कम होना शुरू हो जाता है, एंड इट क्रॉसेस द डेंजर लेवल, इतना कम हो जाता है, तभी जाके हम लोगों के बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन क्रिएट होता है. ये डिहाइड्रेशन की वजह से मेजरली जो भी प्रॉब्लम्स होता है समर सीजन में वो हम लोग फेस करते हैं. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज फैटीग. हमेशा टायर्ड लगता है, ऑलवेज वी फील टायर्ड, कुछ काम करने का मन ही नहीं होता है. सुबह उठ के वी आर टायर्ड, कुछ भी काम कर रहे हैं तो टायर्ड ऑब्वियसली हम होते हैं. ऐसे भी होता है जो ज्यादा घर से बाहर नहीं जाते हैं, फिर भी दे आर फीलिंग टायर्ड. दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम ड्यूरिंग समर सीजन. इसके बाद क्या होता है? इंक्रीज थर्स्ट. अचानक प्यास लगना बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत फ्रीक्वेंटली हम लोगों को प्यास लगना शुरू हो जाता है. और इससे मेजर प्रॉब्लम क्या होता है? हम लोगों को ध्यान ही नहीं रहता है कि हम लोग क्या ले रहे हैं और क्या पी रहे हैं. चलिए, हाथों के सामने कुछ भी है, हम लोग पी लेते हैं. मे बी दैट्स अ वेरी हाई कैलोरी ड्रिंक, मे बी दैट्स अ वेरी हाई शुगर कंटेंट ड्रिंक. हम लोगों को इतना प्यास लगा, इतना गर्मी है कि हम लोगों को पता ही नहीं चला, हम लोगों ने तो पी लिया. अभी क्या होगा? The next moment our sugar will spike up like anything. So this is another major problem. तीसरा प्रॉब्लम क्या है? What is the third problem that we face? That is headache. In summer season, most of you may have noticed कि बहुत frequently headache होता है, most specifically after a long day's work. काम खत्म हो गया, ऑफिस का काम खत्म हो गया, इवनिंग में बाहर का काम करके हम लोग घर पे आए एंड वी स्टार्टेड गेटिंग हेडेक. सर दर्द होना शुरू हो जाता है. अगेन द रीजन इज डिहाइड्रेशन. ठीक है, these are the first three major points. Now coming to the fourth point, that is dry mouth and eyes. अभी क्या हो रहा है? The water level is going down inside our body. तो inside our mouth, around our eyes, क्या हो रहा है? वहां का वाटर लेवल भी या वहां का मॉइस्चर भी धीरे धीरे इफेक्ट होना शुरू हो जा रहा है, जिसके लिए वी आर गेटिंग ड्राई माउथ एंड ड्राई आईज. Then coming to the fifth major point, I think majority of us has gone through this problem, that is deep colored urine due to dehydration, due to lack of water intake. Now coming to the sixth point, dizziness. Suddenly you will start feeling your head is getting lighter. थोड़ा सा बॉडी हल्का लग रहा है, एनर्जी नहीं है बॉडी के अंदर. दैट इज डिजीनेस. एंड द वन ऑफ द मेजर पॉइंट लास्टली, लो ब्लड प्रेशर लेवल्स. कैसे होता है ये लो ब्लड प्रेशर लेवल्स, और स्पेसिफिकली ये समर सीजन में ही क्यों होता है? क्या होता है समर सीजन में? हम लोग नॉर्मल से ज्यादा स्वेटिंग हो जाता है हम लोगों का. मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों को बाहर जाके वी आर वर्किंग, घर पे भी इफ यू आर वर्किंग, मतलब घर के अंदर फिर भी वी आर स्वेटिंग. इसके लिए क्या होता है? अ लॉट ऑफ मिनरल्स गोज आउट ऑफ आवर बॉडी along with a lot of water, and इसके वजह से क्या होता है? धीरे धीरे हम लोगों का बीपी लो होना शुरू हो जाता है. So these are the 7 major problems or symptoms that we face due to dehydration. ये मेजर है. अभी हम लोग एक एक करके ये समझेंगे हाउ टू फाइट बैक विद दिस थिंग्स, कैसे हम लोग इसको संभालेंगे. ठीक है. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, दैट इज टिप नंबर 1, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स. जैसे भी तरीके से हो सके इंक्लूड अ लॉट ऑफ फ्लूइड इन योर डेली रूटीन.
बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दैट शुड बी लो इन कैलोरी एंड लो इन शुगर कंटेंट. ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत प्यास लगा, हम लोगों को समझा ही नहीं, हम लोग भाग के कुछ पैकेट प्रोसेस्ड ड्रिंक कुछ ले लिए या फिर कुछ फ्रूट जूस का पैकेट उठा लिए. नो, दैट विल इंक्रीज योर ब्लड शुगर लेवल्स. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, हाथों के सामने ऐसे कुछ फ्लूइड्स हम लोगों को मौजूद रखना है, ताकि अगर ऐसा हुआ भी वो हाथ के सामने अवेलेबल होगा. Drink about 2.5 to 3 liters of water every day normally. और अगर ऐसा है that you have to work outside for a long time under prolonged sun, your physical activity is more than normal people, तो add a bit more to this 2.5 to 3 water. इससे कम किसी भी तरीके से नहीं होना है water intake. Go for low calorie drinks. नींबू पानी हो गया, छाछ हो गया विदाउट शुगर, जीरा पानी हो गया विदाउट शुगर, डिटॉक्स वाटर हो गया शुगर के बिना. अवेलेबल रखिए हाथों के सामने, ताकि अगर ऐसा सिचुएशन आया भी, यू विल हैव समथिंग इन फ्रंट ऑफ योर हैंड. मेजर पॉइंट क्या क्या है, कैलोरी इंटेक ध्यान रखना है, हाथों के सामने अवेलेबल रखना है, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत प्यास लग गया एंड यू वेंट फॉर अ पैकेज्ड फ्रूट जूस या फिर अ सॉफ्ट ड्रिंक. नहीं, नो, यही में से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा. 3 लीटर से कम एकदम से नहीं होना चाहिए. 3 लीटर शुड बी मिनिमम वाटर इनटेक. This is the first and the most important point that we need to take care of. Now, coming to the next point, that is another very important thing. Check your sugar levels regularly. क्या हो रहा है? It's very hot. थोड़ा सा शायद मील्स इधर उधर हो रहा है और ब्लड शुगर मॉनिटरिंग में नहीं है. You will not understand कब वो हाइपो हो जाएगा. So if you are monitoring your blood sugars and if you know, okay, now this is going beyond normal, you will take immediate action against it. So checking your blood sugar levels regularly is another important point. ये मतलब किसी भी तरीके से भूलना नहीं है. Now coming to tip number 3, adjust your medications as needed. Now this is very much related to the last point. Please keep your blood sugar levels under मॉनिटरिंग. नहीं तो क्या होगा, 1 महीने पहले का ब्लड शुगर है, उसी हिसाब से आपका मेडिसिन भी चालू है, आपको पता ही नहीं चला कि आपका ब्लड शुगर अभी नॉर्मल रेंज तक आ गया है और मेडिसिन का डोज में अभी चेंज चाहिए. तो what you need to do, monitor your sugar levels, keep a contact with your doctor on a regular basis. Inform him or her that my sugar levels are varying like this. What should I do with the dosage? Please help me, please guide me. But do not do anything without your doctor's guidance. Your doctor is your first go-to person if you have to take any decision on your medicine part. उनसे पूछ के कीजिए जो भी करना है. Another thing is, क्या हो सकता है, ब्लड शुगर लो हो गया, हाइपो हो गया, एंड मेडिसिन आपको पता ही नहीं चला कि क्या चेंजेस करना है. तो क्या होगा, वहां पे आपका हाइपो जो ऑलरेडी है दैट विल गेट मच वर्सर. तो हाइपो को रोकने के लिए, शुगर लेवल्स को स्टेबल रखने के लिए मेडिकेशन मॉनिटरिंग पे रखना, ब्लड शुगर लेवल्स मॉनिटरिंग पे रखना, डॉक्टर के साथ रेगुलर कांटेक्ट पे रहना, ऑल्सो कीप अ रेगुलर कांटेक्ट विथ योर हेल्थ कोच. ये सब बराबर से होना है, हैंड ऑन हैंड जाना है, तभी जाके your blood sugar level एकदम stable रहेगा. Fine. Okay. Take a 15 seconds time. I will go to the next slide. I think we crossed 3 tips. Try to go through them, and eventually we will go to the next slide. Tip number 4, which is important but I can understand always possible नहीं हो पाता है, avoid extreme heat. अभी यहाँ पे बहुत लोग होंगे आप में से जिन लोगों को बाहर जाके काम करना ही होता है, मतलब है कुछ नीड है, बाहर जाना ही है, तो हम लोगों के हाथ में 2 रास्ता है. इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, अवॉइड 12 PM to 4 PM का ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पे हीट बहुत ज्यादा होता है. ठीक है,
अगर आप ये अवॉइड कर पाए तो बहुत अच्छा है. अगर ये पॉसिबल नहीं है, नहीं जाना ही है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है, टेक प्रॉपर प्रिकॉशन एंड देन गो आउट. एक वाटर बॉटल कैरी करना ही है एवरी टाइम. डू नॉट स्टेप आउट ऑफ योर हाउस विदाउट कैरिंग अ वाटर बॉटल. देन carry an umbrella, carry an sunglass. ठीक है. Wear some clothing that will cover most of your exposed body areas, ताकि sunlight direct आके body में ना रखे. ओके. और ऐसा another most important thing is, आप बाहर धूप में कुछ काम में हैं, आपको बहुत प्यास लग गया, एकदम धूप में खड़े होके डू नॉट ड्रिंक एनी कोल्ड वाटर और एनी लो कैलोरी ड्रिंक ऑल्सो. नहीं खाना है. डायरेक्ट धूप में खड़े होके कोई एक शेड के नीचे जाइए, गो अंडर अ शेड, स्टैंड और सिट देयर फॉर 2 to 3 minutes, थोड़ा सा ठंडा होके सेटल होके देन हैव योर ड्रिंक, लो कैलोरी और विदाउट शुगर ड्रिंक, व्हाटएवर यू आर कैरिंग. धूप में खड़े होके नेवर हैव एनीथिंग. इट में has it may show some adverse effect, क्योंकि इतना धूप, इतना हीट, and उसमें ही you are taking a very different kind of a temperature fluid, so it may cause different kind of complications. So avoid extreme heat if possible. If not, take proper precaution and then go out. Fine. Then moving on to our fifth slide, protect your skin. अच्छा, the major thing is in this slide, बहुत लोग पूछेंगे शायद, या बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि how diabetes and skin care is related to each other. हम लोग तो शुगर लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, तो यहाँ में से स्किन कैसे आ गया. अच्छा, स्किन is a very important part of our physiology. स्किन में से हम लोगों का पूरा जो स्वेटिंग प्रोसेस एंड एवरीथिंग होता है, विच इज वेरी मच रिलेटेड टू आउटसाइड हीट, वो पूरा फंक्शन हम लोगों के स्किन का होता है. एंड क्या होता है, जिन लोगों का डायबिटीज का इशू है, वी ऑल नो दे आर अ बिट मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस or any kind of skin damages or any kind of nervous damages that is on the upper surface of the skin. तो स्किन को ठीक रखना भी is a very important part of diabetes management. ठीक है. तो हम लोग को क्या करना है, how can we take care of it. As I said, wear something which will cover the mostly exposed part of your body. अगर हो सके फेस भी, फेस covers are also available nowadays. Wear a proper UV protected sunglass, ताकि आग भी थोड़ा सा बच जाए, आईज को भी बचाना जरूरी है. और उसके साथ साथ सनस्क्रीन, यूजिंग सनस्क्रीन अ प्रॉपर, अगर हो सके contact your doctor, ask for a proper medicated sunscreen prescribed from him and use that. क्योंकि if on a prolonged basis your skin is coming in contact with sunlight, skin redness, different kind of skin diseases, sunburn, और ये बहुत जल्दी ठीक नहीं होता है. It can create major skin diseases and that which can be for a long term also, जो लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है. और क्या है, रेगुलर बाथिंग, प्रॉपर क्लीनलीनेस, हाइजीन मेंटेन करना, स्वेट को बॉडी में बैठने ना देना. जितना स्वेट आपका बॉडी में बैठेगा उतना माइक्रोबियल इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ेगा, फंगल इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ेगा. कीप योरसेल्फ जितना हो सके प्रॉपरली क्लीन्ड, मेंटेन हाइजीन. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही कपड़ा यू आर यूजिंग लाइक कंटिन्यूअसली. यूज प्रॉपरली फ्रेश कॉटन क्लोथ्स which will actually help you in proper air passage और air exchange, ताकि स्वेट एकदम ना बैठ जाए बॉडी. और हम लोगों को क्या पता है, डायबिटीज का एक बहुत कॉमन सिम्टम है ड्राइनेस और इचिंग, जो बहुत बहुत कॉमन है. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव फेस्ड दिस, बट बहुत कॉमन है. जितना आप खुद को क्लीन रखेंगे उतना आप इन चीजों से दूर रहेंगे. तो सन से तो बचना ही है. डायरेक्ट कांटेक्ट जितना ना हो, दिस इज द मेजर पॉइंट. डायरेक्ट कांटेक्ट सन और स्किन का जितना कम हो उतना अच्छा है.
ठीक है, ओके टिल दिस मच. Fine. Now coming back to our 6 points. Eat light healthy meals. We face a very common thing during summers. Whatever we are eating, that is not getting digested. जो भी हम खाना खा रहे हैं वो ठीक ठाक डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है. सुबह हमने कुछ खाया, दोपहर तक वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाया, हमने दोपहर का मील स्किप कर दिया. और सोचिए दोपहर के खाने से पहले आपका कुछ एक मेडिसिन जो आपको लेना है, आपने खाना नहीं खाया, आपने मेडिसिन ले लिया, क्या होगा? आपका your sugar may get into the hypo range. तो हाउ टू मैनेज मील्स, कैसे हम लोग समर्स में मील्स मैनेज करेंगे? अच्छा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्मॉल एंड रेगुलर मील्स इंस्टेड ऑफ लार्ज मील्स आफ्टर लॉन्ग गैप्स. फाइन. देन इंक्लूडिंग fewer complex carbohydrates. अभी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या है? सुनने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट इट्स वेरी सिंपल. कुछ ज्यादा वो डिफिकल्ट नहीं है. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जांपल जैसे आपका ओट्स हो गया, आपका ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. सो add fewer complex carbohydrates in your meals. Include a lot of fresh vegetable based dishes. रॉ सैलड, जो भी हम लोग वेजिटेबल्स रॉ खा सकते हैं, प्रिपेयर अ सैलड आउट ऑफ इट. च्यू इट एंड हैव इट, चबा के खाइए, प्रॉपर फाइबर आपके बॉडी में जाएगा एंड इट विल कीप योर बॉडी कूल. द मेजर टारगेट ऑफ समर मील्स आर, ऐसा खाना खाना है जो बॉडी को अंदर से ठंडा रखेगा. इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रिज में से हम लोग थोड़ा सा बर्फ निकाल के या ठंडा पानी निकाल के खा ले, इट विल मेक योर बॉडी कूल. नो, नेवर, ऐसा नहीं होता है. हम लोगों को खाना ही ऐसे चूज करना है जो ऑटोमेटिकली नेचुरली हम लोगों को बॉडी को अंदर से कूल रखेगा. जैसे हो गया फ्रेश वेजिटेबल्स जो मैंने कहा, फ्रूट्स हो गया, फ्रेश फ्रूट्स हो गया, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स चूज कीजिए जो भी अभी समर्स में अवेलेबल है. हाँ, अभी एक कॉमन क्वेश्चन आएगा सबकी तरफ से, आई कैन अंडरस्टैंड. वाटरमेलन, which is a very favorite fruit for all of us and which is very much easily available in summer season also. तो watermelon क्या हम खा सकते हैं? I get a very common query from everyone. So the thing is, watermelon is a bit high glycemic index fruit. watermelon का glycemic index थोड़ा सा ऊपर की तरफ है. तो क्या हम नहीं खाएंगे? खाना ही नहीं है? No. First check your sugar levels. If they are under control, confirm with your health coach once. हफ्ते में 2 दिन in the mid morning time or specifically before your physical activity time, you can have 2 slices of 2 small or medium sizes of watermelon twice a week. But इससे ज्यादा ना ही हो तो अच्छा है, otherwise it can spike up the sugar levels. तो इससे क्या होगा? एकदम ना भी नहीं होगा, आपका थोड़ा बहुत इंटेक भी नहीं हो जाएगा, और बहुत जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो प्रॉब्लम है, दैट विल आल्सो नॉट अफेक्ट द शुगर लेवल्स. सुबह आपको वाटरमेलन लेना है, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी 5 या 10 मिनट इवनिंग को बढ़ा दीजिए, इट विल ब्रेक डाउन द कैलोरी ऑफ इट. तो लाइक दिस वी कैन इंक्लूड अ लिटिल बिट ऑफ वाटरमेलन. इसके अलावा क्या है? गो फॉर लीन मीट्स. रेड मीट नहीं लेना है, जितना हो सके रेड मीट अवॉइड कीजिए, स्पेसिफिकली समर्स में. एक तो नॉर्मली रेड मीट से कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम वगैरह होता ही है, बिकॉज इट्स वेरी हाई इन एनिमल फैट, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट मेक्स योर बॉडी हॉट फ्रॉम इनसाइड. हीट क्रिएट होना शुरू हो जाता है एज सून एज यू विल टेक रेड मीट. स्मूदीज ऐड कीजिए. डू नॉट गो फॉर फ्रूट जूसेस, go for vegetable smoothies. Ask your health coach to share some recipes of vegetable smoothies. इससे क्या होगा? आपका फाइबर इंटेक भी होगा, आपका फ्लूइड इंटेक भी होगा, लेकिन शुगर लेवल्स में भी कुछ इफेक्ट नहीं होगा. वेजिटेबल स्मूदीज आर अ ग्रेट ऑप्शन टू इनकॉर्पोरेट फ्लूइड इन योर डेली डाइट. हम लोगों का नॉर्मली टेंडेंसी होता है टू हैव फ्रूट जूसेस. Try to avoid fruit juices as much as possible. किसी भी तरीके से नहीं, पैकेज्ड भी नहीं, घर पे बनाया हुआ भी नहीं.
And if you are going for this vegetable smoothies, do not throw out the fiber, have it with the fiber. फाइबर के साथ लेना है, फाइबर को फेंकना नहीं है. तो क्या होगा, if you are targeting weight loss or if you are targeting blood sugars to come under control, तो 2-3 काम एक साथ आपका हो जाएगा, अलग अलग से आपको करना नहीं पड़ेगा. Okay, so while planning meals, the major thing that should be in our mind to keep those options which will keep our body cool from inside, body को ठंडा रखेगा अंदर से. Another cooling option is mint leaves. पुदीने का पत्ता बहुत अवेलेबल होता है समर सीजन में, मार्केट में भर भर के अवेलेबल होता है. आप नॉर्मली थोड़ा सा पुदीने का पत्ता किसी भी तरीके से, या तो यू कैन हैव इट एज अ स्मूदी इंग्रेडिएंट, सैलड्स में ऐड कीजिए, फ्रूट सैलड में ऐड कीजिए. इट हैज गॉट अ वेरी कूलिंग इफेक्ट ऑन आवर बॉडी, नेचुरल कूलिंग इफेक्ट ऑन आवर बॉडी. डिटॉक्स वाटर में डालिए अपना. even this pudine ka patta has gotten very good effect on keeping your blood sugar levels under control. Okay, I think we are pretty much okay with the meal thing. If you have any query, please drop it in the chat section. I will try to reply back your queries post this session. Now coming back to our tip number 7, monitoring your feet. Why it is important? We all know people who are diabetic, and if somebody has has any history of very high sugars previously, so we may face a very common thing, that is neuropathy. Our nerve starts getting affected. इसके लिए क्या होता है, हम लोगों के फीट के अंदर, पैर के नीचे में जितना सेंसेशन होना चाहिए नॉर्मल, उतना 100% सेंसेशन नहीं होता. मतलब सोचिए जितना गर्म बाहर है उतना आपका पैर के नीचे वो फील नहीं होता है, आपको पता ही नहीं चलता है हाउ मच हॉट इट इज. सोचिए आप एक नॉर्मल सा स्लीपर पहन के यू वेंट आउट, बाहर बहुत गर्म है, आपका पैर के नीचे का जो सेंसेशन है वो उतना आप समझ ही नहीं पाए कि कितना गर्म है, और उतना गर्म से कुछ डैमेज हो गया पैर के नीचे. एंड यू नो पीपल हु आर डायबिटिक, कुछ भी एक छोटा सा भी चोट आ गया, एक छोटा सा भी कुछ वुंड हो गया, it takes a lot of time to heal. So while going out, specifically in proper summer season, wear a very protected footwear. और वो ऐसा होना चाहिए कि आपका जो पैर है उसको एकदम 100% प्रोटेक्शन दे बाहर के टेम्परेचर से, नहीं तो कब डैमेज हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा. वो लाइट वेट होना चाहिए. अगर इफ यू आर वेयरिंग अ कवर्ड शू, वो अंदर से एकदम क्लीन एंड ड्राई होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि अंदर पूरा स्वेट हो गया है एंड यू आर वेयरिंग दैट कंटिन्यूअसली. नहीं, क्लीन योर शूज ऑन अ रेगुलर बेसिस, उसको भी क्लीन रखना, हाइजीनिक रखना, देन ओनली यू कैन यूज दैट. और अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, मॉनिटर योर फीट रेगुलरली. एटलीस्ट एवरी डे, सब कुछ काम वगैरह खत्म हो जाने के बाद, बिफोर गोइंग टू योर बेड, एटलीस्ट एग्जामिन योर फीट. नीचे में कुछ हो तो नहीं गया, कुछ वुंड तो नहीं है, एटलीस्ट चेक कीजिए ऑन अ मतलब रेगुलरली चेक कीजिए. अगर कुछ वुंड हुआ भी, टेक एक्शन अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो टेकिंग केयर ऑफ योर फीट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, बस उतना ही है. नहीं, these all are very important point along with it. Okay, now coming on to our 8th slide, plenty of rest. I always say one thing, in diabetes जितना important physical activity है उतना ही important proper rest है. तो getting a proper sleep of 7 to 8 hours every day is equally important, along with maintaining a physical activity routine on a daily basis. बाहर से कहीं आप थक के आए हैं, बहुत गर्मी है बाहर, घर पे आके थोड़ा सा पहले बैठिए, नॉर्मल टेम्परेचर तक बॉडी को पहुंचने दीजिए, रेस्ट लीजिए,
ऐसे मत कीजिए आप भाग के कहीं से आए फिर भाग के और दूसरे काम शुरू कर दिए, आपको पता नहीं चला, धीरे धीरे योर बॉडी इज एक्चुअली गोइंग ऑन द डिहाइड्रेशन फेज। थोड़ा सा ब्रेक्स लीजिए काम के बीच बीच में। हम लोगों के ऐप में भी देयर इज एन ऑप्शन कि सेट वाटर रिमाइंडर, वाटर रिमाइंडर सेट करके रखिए। अगर आप बहुत बिजी भी है, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आपको याद नहीं रह रहा है, एटलीस्ट वाटर रिमाइंडर सेट करके रखिए। एटलीस्ट आफ्टर एवरी 1 and 1.5 आवर यू विल गेट अ रिमाइंडर कि नहीं मुझे पानी पीना है। इट्स ऑलरेडी 1.5 आवर और 2 आवर्स हो चुका है, मैंने एक ग्लास भी पानी नहीं पी। सेट कीजिए, यूटिलाइज कीजिए इन सब चीजों को। फिजिकल एक्टिविटी के लिए बाहर जाना है, ठीक है, आप काम खत्म कर पे घर पे आइए, एक ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, फिर फिजिकल एक्टिविटी के लिए जाइए। एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिजिकल एक्टिविटी आप एकदम स्कॉचिंग सन में खड़े होके करते हैं, नहीं। या तो अर्ली मॉर्निंग जाइए, या तो इवनिंग में जाइए, या तो घर के अंदर अगर ऐसा कुछ स्पेस है विच इज फिजिबल टू डू फिजिकल एक्टिविटी, उस जगह पे कीजिए। ओवर एग्जॉस्ट मत कीजिए खुद को, ठीक है। ओवर एग्जॉशन से क्या होगा, आप और भी टायर्ड फील करना शुरू कर देंगे, यू विल स्टार्ट फीलिंग मोर टायर्ड। कब रेस्ट लेना है, कब ब्रेक लेना है, ये आपको खुद को ही आपके काम के हिसाब से ठीक करना पड़ेगा। तो शेड्यूल योर डे अकॉर्डिंगली कि दिस विल बी माय वर्किंग टाइम, दिस विल बी माय ब्रेक टाइम, दिस विल बी माय फिजिकल एक्टिविटी टाइम, ताकि आपका एक्टिविटी भी बराबर से हो, ताकि आपका रेस्ट फेजेस जो है वो भी बराबर से हो। डन। पॉइंट नंबर 9, abstain from drinking alcohol. Alcohol is such a product जो लेने से बॉडी के अंदर इंस्टेंट हीट जनरेशन स्टार्ट हो जाता है। बाहर वैसे ही गर्म है, टेम्परेचर इज हाई लाइक एनीथिंग, और आप अल्कोहल ले रहे हैं, सोचिए फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग, क्या होगा, बॉडी के अंदर अचानक हीट क्रिएशन स्टार्ट हो जाएगा। और उसमें डायूरेटिक्स होता है, डायूरेटिक्स क्या करता है, आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ा देता है, आपको बार बार यू नीड टू गो टू द रेस्ट रूम, आपको लगेगा कि अरे अचानक क्या हो गया, व्हाई आई हैव टू गो टू द रेस्ट रूम सो फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, बाहर गर्मी है, वाटर इनटेक आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होगा, अगेन दैट डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन विल कम अगेन इन द सिनेरियो। डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन होने से क्या होगा, आपका शुगर लेवल स्पाइक हो जाएगा। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू वन अनदर। हम लोगों को एक एक करके वी हैव टू कीप ईच ऑफ दिस थिंग्स अंडर कंट्रोल। ओके, अल्कोहल जितना हो सके अवॉइड कीजिए और लेना ही नहीं है, आई वुड सजेस्ट लेना ही नहीं है, अल्कोहल टच भी नहीं करना। फाइन, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टिप्स, दैट इज परफेक्ट एंड कंफर्टेबल क्लोथिंग। जितना हो सके लाइट कलर्ड क्लोथ यूज कीजिए। लाइट कलर्ड क्लोथ्स क्या करते हैं, जो भी बाहर का हीट है ना वो एब्जॉर्ब होने नहीं देता है, इट एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स देम बैक। और क्या होता है, आपका स्वेट जो है वो ट्रैप नहीं होता है। लाइट कलर्ड कॉटन ब्रीदेबल क्लोथ्स पहनिए, पॉलिएस्टर, डार्क कलर क्लोथ्स, या फिर ऐसा कुछ क्लोथ जो आपके स्किन में इट इज नॉट कंफर्टेबल, ऐसे चीजें मत पहनिए। और क्या, वट एवर यू आर वेयरिंग उसको भी एकदम क्लीन और हाइजीनिक एकदम रखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू आर रिपीटिंग द सेम थिंग लाइक ऑन अ रेगुलर बेसिस। बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दीज थिंग्स, नहीं तो क्या होगा, वट एवर पॉइंट्स वी डिस्कस टूडे एवरीथिंग विल लीड टू डिहाइड्रेशन। एंड अगर डिहाइड्रेशन हुआ, बॉडी के अंदर पानी कम हो रहा है धीरे धीरे, और क्या होगा, either it will spike up the sugar, or in some adverse scenarios, or in some adverse cases it will make the sugar low, हाइपो हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा बाहर।
और आपका शुगर हाइपो हो गया. Try to be very careful about all these things. Another important point is जितना हो सके फास्ट फूड अवॉइड कीजिए इस टाइम पे. एक बहुत कॉमन चीज व्हाट आई हैव नोटिस्ड कि वी आर वर्किंग आउटसाइड, बहुत प्यास लग गया, कुछ है आइसक्रीम का शॉप या एनी सॉफ्ट ड्रिंक का शॉप, मतलब वी फील लाइक वो लेना ही, तो मतलब आई कैनॉट विथस्टैंड दिस हीट. ये नहीं करना है, घर में से कैरी कीजिए. कोकोनट वाटर is a very good option. Now the point is again monitor your sugar levels. अगर शुगर बहुत हाई है तो कोकोनट वाटर रेगुलरली नहीं लेना है, बट अगर शुगर लेवल्स नॉर्मल है तो हफ्ते में 1 या 2 दिन यू कैन गो फॉर कोकोनट वाटर ऑल्सो, बिकॉज कोकोनट वाटर कंटेन्स अ लॉट ऑफ मिनरल्स. जो बीपी लो होने का चांसेस है, इट में हेल्प यू विद दिस प्रॉब्लम. कोकोनट वाटर हफ्ते में 1-2 दिन. आस्क योर हेल्थ कोच कि माय sugar levels are this, can I have coconut water? Please confirm with your health coach once. Fine. Then detox water. Detox water is a very like a healthy thing. It will help your body to detoxify also. और क्या होगा, जो फ्लूइड का जरूरत है वो भी मेंटेन करेगा. डिटॉक्स वाटर तो मैं बोलूंगी एकदम सुबह उठ के बना के रख दीजिए फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. एटलीस्ट 4-5 घंटे के लिए बना के रख दीजिए एंड सिप इट जितने देर तक, एंड जस्ट कंप्लीट इट विद इन 3 hours. ठीक है. और वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक, ठीक है, कुछ भी पैकेज नहीं लेना है. वो जितना अच्छा हो जाए, वो जितना डायबिटिक फ्रेंडली हो जाए, वो जितना पैकेट में लिखा हुआ हो कि ये शुगर लेस है, नहीं लेना. क्योंकि पैकेज्ड जो भी चीज होगा ना, वो फ्रूट जूस हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होगा ही, उसमें केमिकल्स होगा ही. ठीक है. तो हम लोगों को जितना अच्छी तरीके से बॉटल के ऊपर लिखा हुआ हो कि जीरो शुगर एडेड, लो इन कैलोरी, फॉर डायबिटिक फ्रेंडली पीपल, यू कैनॉट जस्ट कीप आउट द प्रिजर्वेटिव आउट ऑफ. तो पैकेज्ड, प्रिजर्व्ड, प्रोसेस्ड कुछ भी नहीं लेना है, नेचुरली लीजिए. लेमन वाटर बनाने में, लेमन वाटर इज द इजीएस्ट ड्रिंक टू हैव इट इन समर सीजन. जीरा वाटर हो गया आपका, छाछ हो गया, फिर आपका डिटॉक्स वाटर हो गया. कोकोनट वाटर मैंने कहा जस्ट चेक योर शुगर लेवल्स, आस्क योर शी विल हेल्प यू आउट विद दिस. I want to suggest you a very interesting dessert recipe today. Whoever is diabetic and want to have something cold like a ice cream, but they are unable to have it, what you can do, just take some घर पे बनाया हुआ दही, कर्ड जो होता है घर पे बनाया हुआ, बाहर का नहीं, वो आप थोड़ा सा लीजिए एंड टेक सम एनी प्रेफर्ड एप्पल और जो भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट है दैट यू लाइक. ठीक है. वो लेके आपको क्या करना है, उस फ्रूट का पल्प निकालना है, छानना नहीं है. वी विल नॉट डिस्कट एनी फाइबर आउट. देन इन अ मिक्सर ग्राइंडर mix this pulp and this curd together. It will become a kind of a mixture, a semi solid mixture की तरह वो हो जाएगा. And if you want you can add some mint leaves also, it will give some flavor to it. उसको एक कंटेनर में रख के just store it in your refrigerator and freeze it, and after 2 or 3 hours it will freeze and it will become a fruity kind of a dessert that you can have happily. कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें से, एंड यू कैन हैव इट एज अ आइसक्रीम की तरह ही, बट आइसक्रीम नहीं है, यू कैन हैव इट. ठीक है. ओके. देन कमिंग टू टिप नंबर 11, मेडिकल सप्लाईज. आपका जो भी मेडिसिन है रेगुलर जो आपको चाहिए होता है, इंसुलिन पंप, शुगर मॉनिटरिंग डिवाइसेस जो है, ऐसा नहीं होना चाहिए खत्म हो गया. हमेशा मॉनिटर कीजिए, अगर कुछ अवेलेबल नहीं है पहले से मंगवा के रखिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका अभी इमरजेंसी में जरूरत है और वो आपके पास अवेलेबल ही नहीं है. तो पहले से नोट कीजिए, एटलीस्ट
10 दिन पहले से मॉनिटर करके वो मंगवा के रखिए, क्योंकि वो मंगवाने भी 2-3 दिन लग ही जाए। तो ऑलवेज कीप अ चेक ऑन योर मेडिसिन बॉक्स कि क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या नहीं है, व्हाट यू नीड टू रिस्टोर। और बॉक्स जो है वो एक ड्राई जगह पे रखिए, शेड होना चाहिए वहां पे, डायरेक्ट सनलाइट नहीं होना चाहिए उस जगह। अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तब भी कैरी कीजिए एक अच्छा स्टर्डी बॉक्स के अंदर। किसी भी तरीके से मेडिसिन हो गया, किसी भी तरीके से आपका शुगर मॉनिटरिंग डिवाइस हो गया, आपका स्ट्रिप्स हो गया, वो मिस नहीं होना चाहिए। एकदम सब बराबर से रखिए, नहीं तो फिर फेस दैट प्रॉब्लम, शुगर मॉनिटरिंग डिवाइस खराब हो गया या स्ट्रिप्स नहीं है, हम लोगों ने तो शुगर मापा ही नहीं, इतना शुगर हाई हो गया हम लोगों को पता ही नहीं चला, या लो हो गया हम लोगों को पता ही नहीं चला, एंड ये गड़बड़ हो गई। तो जो भी इमरजेंसी मेडिसिन वगैरह है वो जितना हो सके वो अपने पास रखिए, अवेलेबल रखिए, एंड ऑलवेज keep contact with your health coach on a regular basis. Whatever I suggested, whatever drinks I suggested today, please आप एक बार उनसे पूछ लीजिए for the recipes, they will help you out. Any query, any question, please put it in the chat section. I will try to reply all your queries. Great. Thank you so much, Madhumanti. I think it was a fruitful discussion. Summer is currently ongoing, and I think many of us have these questions. Thank you so much for giving all your insights to us. We have a few users who have asked some questions specific to today's discussion. Let us start with that conversation. Good evening to all our lovely users once again. Thank you so much for your lovely greetings acknowledging us. It is really a great acknowledgement and motivation for us that you remember us by our faces, by our names. Thank you so much for that. Hello, Mr. Chakravarti. Good evening. So, Madhumanti, Mr. Chakravarti has a question. He's asking, what is low calorie drink? If it is without sugar, can I have it with jeera, ajwain, or lemon water? Okay. So coming to the question, what is a low calorie drink? लो कैलोरी ड्रिंक ऐसे एक ड्रिंक है जहाँ पे तो शुगर एकदम नहीं होगा, या तो जहाँ पे आपका जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जो इजीली ब्रेक होके आपके ब्लड में शुगर को स्पाइक करेगा, वो भी अवेलेबल नहीं होना चाहिए। अभी ऐसे कौन से चीजें हैं जो शुगर नहीं है लेकिन फिर भी आपका कार्बोहाइड्रेट, लेकिन फिर भी आपका ब्लड को शुगर को स्पाइक कर सकता है? बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स जो है वो भी अगर है तो वो भी नहीं होना चाहिए आपके ड्रिंक में। शुगर नहीं होगा, ऐसा कुछ ऑप्शंस जिसमें नेचुरल शुगर्स बहुत ज्यादा है, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है, ऐसे चीजों को भी हम लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा। आप लेमन वाटर हो, छाछ हो, आपका डिटॉक्स वाटर हो, थोड़ा सा जीरा पाउडर के साथ यू कैन है। Great. Thank you so much, Madhu, for that. I think, Mr. Chakravarti, this will help you combat summers. So, hello, Amolji. Good evening. Thank you so much for staying active in today's session. So, Madhumanti, Amolji is asking how extreme heat affects our blood sugar levels. Could you share some information? Hi Amol, great to like interact with you. So what happens ना, when heat is very high outside, बहुत गर्मी है बाहर, तो क्या हो रहा है automatically if we don't maintain a proper fluid intake या food intake, क्या होगा, हम लोगों के बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, और ड्यू टू दिस डिहाइड्रेशन थिंग हम लोगों का शुगर स्पाइक अप हो सकता है। तो हमने आज जो जो भी पॉइंट्स डिस्कस किया, दोस पॉइंट्स पर हाउ टू फाइट विद दिस डिहाइड्रेशन थिंग, ताकि बॉडी के अंदर वाटर लेवल डेंजरसली कम ना हो, ताकि अगर कम हो गया तो इट विल इन टर्न स्पाइक अप द ब्लड शुगर। आई होप दिस आंसर योर क्वेरी।
Thank you so much, Madhu. Mr. Harish Gopinath, good evening. Thank you so much for your association with us. You have been regularly seen in the webinars. Thank you for your active participation. So, Madhumanti, Mr. Harish wants to know, can he consume anar in moderation, that is pomegranate? And how should I manage low blood pressure in summer season? Okay. Now, I personally like communicate with Mr. Harish Gopinath. So I know that your sugar levels are under absolutely control. It's very much under control. As I was mentioning, please contact with your health coach to monitor the sugar levels first. So in your case, I may suggest in very much limited amount in moderation once or twice a week. You can include a little bit of anar in your daily meals, specifically in the mid morning time, or when you have some time for physical activity where the calorie will break down. That time you can have once or twice a week, not a huge problem. But keeping this statement in mind that your sugar levels are under control. Great. Thank you so much, Madhu. And just to add to what Madhumanti said, Mr. Harish, managing low blood pressure is also a technique. I think lemon, jeera is something which can help you manage your low blood pressure. Try to ensure every 2 hours you're keeping yourself hydrated. You're having a glass of water in every 2 hours and some kind of a drink, some kind of a liquid in your every meal. That is important. Also, with that, we got to know that Madhumanti is your health coach. Do share your experience. How do you feel connecting with her face to face today? I would love to know as a part of AccuCheck Wealthy family. Thank you so much once again for your question. Yes. So going ahead, we have Sanjeev ji. Hello, Sanjeev ji. Good evening. कैसे हैं आप? Thank you so much for your active participation today. I can see Sanjeev ji has asked different types of questions. Let me combine them for you. Detox drink recipe. Um, I think you had shared in the session. Maybe if you can repeat that. And there are questions regarding how much should be the tea intake, specifically black tea or green tea, and can roasted peanut be eaten? If you can answer these questions. Okay, so hi, Mr. Sanjeev. Okay, so coming to your first question, please suggest detox drink recipe. So what you can do in a 1 liter water bottle, normal water. Okay, you can add few slices of cucumber, few mint leaves, few slices of lemon, and 1 or 1.5 inch piece of a ginger. Now, what you need to do, you need to keep all these things soaked in this water for at least 3 hours. ताकि क्या होगा, जो भी उसके अंदर का न्यूट्रिएंट्स है वो वाटर में धीरे 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 एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा एंड योर डिटॉक्स ड्रिंक विल गेट रेडी. लेकिन 3 घंटे से कम मत रखिए, मिनिमम 3 घंटा उसको रखिए. अर्ली मॉर्निंग भिगो दीजिए सब कुछ, और यू कैन हैव इट मिड मॉर्निंग से यू कैन स्टार्ट हैविंग दैट थिंग. So this is your detox drink recipe. You can ask your health coach also. She can also help you out with this for a proper written recipe format also. Now coming to the next question. How much green or black tea in a day is good? Okay. Now the thing is, I would suggest if you want to have green or black tea, max to max 2 to 3 times a day, and not more than this, and not more than 250 ml. It will be best if you can have once 250 ml of a black tea and once 250 ml of a green tea. That's the best like balance that you can keep throughout a day. Okay. Cold also you can take. Cold, it should not be like very cold ice chill, because any extreme temperature may affect your body adversely. A little bit cool, a little bit more than the normal temperature, a little bit lower than the normal temperature is advisable. I think this answers your second question. Now coming to your third question, that roasted
peanut, right? Okay. Now I would ask, please consult with your health coach about your cholesterol level, your body weight, and also your blood sugar levels. We have to check all these three parameters to suggest you this roasted nut intake. If everything is under control, once in a while, one handful, not more than that, as a snack you can have. Great. Thank you so much, Madhumanti, for that. We have a few more questions. Let's listen from our uh, users today. Um, what is detox water? And adjacent question to this is, can we drink detox water on an empty stomach? Hello, Mr. Vivek. Hello, Mr. Praveen. Thank you so much for your active participations. Our expert today will answer your questions. Yeah, Madhu. Okay. What is detox water? You all may have noticed whatever ingredients I have suggested for this detox water, they are either vitamin C rich or they have high fiber intake in that and along with some other vitamins and minerals. Now, this vitamin C and everything has got some specific property which can detoxify your body. Whatever toxins are creating inside our body due to our daily like digestion process, absorption process, whatever we are eating, maybe some adulteration is there in your food items that we are eating, and that is creating some kind of toxins inside our body. Also, if we are working for a very long time in a very congested area and the oxygen intake is not that much, that can also result in toxin creation inside your body. So if you have this detox water on a regular basis, this will help your body to detoxify these toxins on a regular basis. It will help it. Vitamin C, an antioxidant, is a major product of lemon. It will help to control the oxidation of your body cells. Great. That we know that it is antioxidant is everywhere nowadays. Great. So I think this is a bit technical and medical information for our users, but I'm sure they understand the importance of this and they can use it on a day-to-day basis. Thank you for sharing that. We have few more questions, just trying to check them. Yes. So Mr. Vivek also wants to know that if you can reshare your ice cream recipe, which is a healthy type of ice cream. Okay, sure, I will. So what you need to do, take some homemade curd, okay, that we prepare in our home. Take some homemade curd and take any low glycemic index fruit that you prefer. That can be apple, that can be papaya, any low glycemic index fruit option. What you need to do, you just make pulp out of that fruit. Do not strain it. Do not throw out any of the fibers. And then in a mixer grinder, you add the curd, the pulpy fruit, and some mint leaves. Mix everything together and put it in the refrigerator for 3 to 4 hours. After 3 to 4 hours, this thing will set as a frozen dessert that you can have in place of having ice cream. This will not harm your health in any form. Great. Thank you so much for resharing that. Mr. Amol is asking what is the difference between insulin sensitivity and insulin resistance? Hi Amol. Also, I connect with Amol on a regular basis. So Amol, this is a bit, I have to explain this thing a bit. So I think we can have a proper, explain discussion on our regular chat or call session. I think I will be able to make you understand much more, easily through our personal conversation or through our chat sessions. Sure. Thank you so much. Please connect with Mr. Amol as soon as Sure. possible so that you can guide him on his queries. Uh, Let me go through some other questions. Hello, Avinash ji. Good evening. Thank you so much for joining today's session. I'm very happy to see you active today's discussion. So, Avinash ji wants to know, Madhu, what care and restrictions should be taken by all those
whose blood sugars are in normal range or are under control, specifically in summers? Okay. So, for example, people whose blood sugar levels are absolutely under control, there is no, scenarios of sugar level spike or something. Then also you have to take care of this dehydration thing. Then also you have to take care of, regular intake of proper fluids. This is point number one. Point number two, check whether your sugar levels are near the lower range or the upper border range. If your sugar level is near the lower border range, just make it sure that like you should not skip any meals or do not stay in empty stomach for a long time. Otherwise, your sugar level may fall. If your sugar levels are in control, then also keep all these things in mind, that do not go for sugary drinks, do not go for very high calorie, any fluid options. Because see, if your sugar levels are under control, then also we should not put any extra carbohydrate load inside your body, because it may create some problem in future. Great. Thanks for that, Madhu. Hello, Mr. Praveen. Good evening. We just answered your question on drinking detox water on an empty stomach. You have more better solutions for it. Speak to your health coach for more information. She can guide you better. All right. Moving on, we have Mr. Prakash. Hello, Prakash ji. Good evening. Thank you so much for joining today's session. Prakash ji is asking us, Madhumanti, milk tea without sugar in a day, is it preferred? I'm habituated to using this. Okay, so if you are habituated with this, first check your sugar levels. Okay, if sugar levels are under control, a little bit of, a 15 ml of milk or maximum 30 to 35 ml of milk, double toned milk without fat, you can use for your tea. It should not be like a lot of milk and a little amount of water and tea, that will disturb the balance. Try to maintain the amount of milk that you will be using, and most importantly, that should be double tone, like without fat one. Once in a Correct. day is okay. 250 ml once in a day is still okay. Great. Yes. Thank you so much for that. Um, Mr. Chakravarti is asking us how many calories does plain water have? Would you like to share information on that? Yeah, actually normal plain water is actually calorie less. It contains minerals, but it's actually calorie less. Normal water does not contain any kind of calories. Great. Thank you for sharing that. Hello, Mr. Harshal. Good evening. Thank you so much for your active participation today. Mr. Harshal wants to know how should you monitor your medication when sometime after PP is 180 after lunch and rest of the time it is 120. Hi Harshal, I also connect with Harshal on a regular basis. So Harshal, point number one that you need to check, that what you are having and when exactly the sugar level is spiking up, after which meals and after having what. Is it like you are having a very low calorie meal and your sugar levels are 120, and on the next day you are having a calorie dense meal when the sugar level is spiking up or not? So we can have a specific discussion on this in our next call when we will connect. So what you are eating, and upon it how the sugar levels are varying, we need to check that. Great. I think a personal conversation will help resolve queries more. So if you can do this in the Sure, coming week, sure, it sure. will really help Mr. Harshal. Mr. Chakravarti is asking the same question for plain water. I think we just discussed. Plain water has no calories. Please go on, have it. Mr. Harish has given a feedback for your counseling and coaching. Thank you so much, Mr. Gopinath. We will definitely share it with our team. Mr. Vivek, good evening. Thank you so much for connecting with us. He is asking, can aloe vera be taken in summer? Will it help? Mr. Vivek, how you want to use this aloe vera? You can happily use aloe vera for your, as a skin lotion, or for keeping your skin hygienic and clean, as a, skin cooling agent. You can happily use that thing.
It's a very Great. cooling kind of a thing. You can use it. Great. Thank you so much, Madhumanti, for that. Aloe vera juice, aloe vera, gel, aloe vera creams are really great for summers. Please go ahead with all of this. Mr. Chakravarti wants to know how you rate diabetic free cold drinks. Uh, are they really diabetic free, or they are just marketed in such a way? Very interesting question to answer. Like, very interesting question to answer this. So I would like to share that I won't give these diabetic friendly drinks a lot of marks, because in the ingredient list now there are a lot of things that go in the background. They will mark it as diabetic friendly without added sugar, but we don't know what amount of sugar naturally it does contain. Zero added sugar during processing, like they have not added any sugar during the processing, but maybe naturally the particular thing contains a lot of natural sugar. What, where will it go? So I would not give diabetic friendly drinks huge marks. Great. Thank you so much for that. Sugar-free flavor catch sodas. I think no sodas, no cold drinks, no ready to eat juices, ready to drink juices are actually healthy. Eat a fresh fruit, eat a plate of fruit, eat fruit salad. That is more helpful for your body. Moving on, thank you so much, Mr. Shrikant Mehti. We'll keep sharing our knowledge through such sessions every week. Don't forget to join us on every Saturday between 6 to 7, and we'll definitely keep improving your knowledge on diabetes and health management. Mr. Avinash is asking, aloe vera pulp from leaf, if taken on empty stomach every day, is it helpful? So I would ask you to, as per your sugar levels, you can just connect with your health coach, because monitoring your sugar levels will be a very important thing if I have to suggest you this thing. So please, I would suggest connect with your health coach once to ask this, because without knowing the sugar level, I cannot suggest on this thing, because if your sugar levels are normal, it may drop the sugar level. Absolutely. Thank you so much for sharing that. I think your health coach who monitors you day to day is a great person to answer that. But if you still need some expert assistance, we are there and you can approach your health coach for any help you need. Hello, Mr. Ashok. Thank you so much for joining today's session. So, Madhu, Mr. Ashok wants to know what is the effect of air conditioners on our body during summer? Okay, so first of all, let us think very practically. When the heat is very scorching outside, we all want to stay in an area where the temperature is very, soothing. So what we need to keep in mind, if the temperature is very extreme outside, if you want to use the air conditioner, the temperature should not be very chilling. The temperature should be in a moderate kind of a temperature, so that if you are going out also, it will not create a temperature difference immediately inside or outside your body also. Because if a sudden temperature fall or rise may happen na, that may create some kind of adverse effects. Also, if you are using, if you are under an air conditioner for a very long time, it may create some kind of moisture deficiency on your skin. So take care of this thing. Have a lot of water, because you are under a air conditioner, you are not getting that outside heat and thirst as it should be, and you are taking less water. Keep a note of your water intake even you are under an air conditioner. And most Great. importantly, the temperature should not be chilling, it should be in a moderate temperature. Great. Thank you so much for that, Madhu. We have two last questions based on detox water. Anil Khurana ji, good evening. Thank you so much for joining us today. So, Anil ji wants to know, can we add salt and pepper in detox just for some taste? And in a week, how many days should we have detox water? Okay.
Detox water weekly 4 to 5 days you can happily have. No problem with that. You can happily have. And salt and pepper. Keep a note on your blood pressure. If your blood pressure tendency is to rise, then avoid salt. But if you see, okay, your blood pressure is normal or it is on the lower side, okay, you can add a little bit of, Himalayan pink salt or a little bit of rock salt to it. Great. Thank you so much for that information. And with this, we come to an end of today's session. Lot of information, lot of questions, lot of knowledge sharing. As promised, I'm going to come back with a lot of informative sessions, lot of knowledge sharing, lot of series of webinars for all my lovely AccuCheck Wealthy family. Meanwhile, summers are coming. It's the season of mangoes, watermelons, lot of fresh fruits, lot of hydration. Please ensure you have enough water. Take care of your health, monitor your blood sugar levels. Next week, I am coming up with a new host, a new session, and a lot of information. Till then, take care of your health. Thank you so much, Madhumanti, for those insightful session. See you all next week. Thank you. Bye bye. Bye bye.